Okay, so I hope my screen is visible and both of you have put your attendance in the chat box. So we can start with the new subject, that is signal and system. I hope you people don't have any like doubts regarding control system. Like if you have, like you want to take some topic from it, we can maybe take one more lecture on it next time. Okay, so if you think like, well, there should be one more lecture on the control system subject, we can take it later on also. Okay, so signal and system is also again a very important topic, um, by in gate perspective. Okay, so it is normally asked, like there are questions for 7 to 11 marks in gate examination. Minimum 7 marks question I have observed till now. Okay, so basically we have to deal with signals here. Like we need to have a very proper understanding of signals in order to for that on that purpose only we learn or we study signal and systems. So without delay, let me just uh, discriminate signals, or there are certain types of signals. So what are those? We will see. Just a second, let me just scroll down. So signals can be classified as, so the first type for it is, it can be a random signal or it can be a deterministic signal. So I think I do not need to explain you much theory regarding this, right? So random signal means we cannot define that signal with mathematical formula, or it is random in nature. So that is nothing but basically a random signal. Welcome Arjun, you are a bit late. Okay, but put your attendance, and we have just started. Yeah, good evening. We have just started. So types of signal we were learning, and there are two types of signal: a random signal and deterministic signal. Again, so I will not like perform a tree like this. Okay, so these are two types of signal. Again, we have uh, other types of signal as well. So signal can be classified into again two type, that is analog signal and digital signal. Okay, or we can again discriminate those signal in the form of continuous signal or discrete signal. Okay, so there is difference in digital and discrete. Okay, there is a difference in analog and continuous. So we will learn that difference with time. So yeah, welcome Pranshu. Okay, so today we have a good number of students and I'm very happy with it. Okay, so I will not like go into much deep definition of these signals. So you all know what is analog signal, what is digital signal, what is continuous signal, what is a discrete signal, all those things. You know it, right? So my question for you would be, do you have any idea about periodic signal and aperiodic signal? So do you know that what is periodic signal and aperiodic signal? If you know, you can just simply put yes in the chat box. Yes, Raman knows that. Okay. So Arjun and Pranshu, you just put your attendance in the chat box. Okay, so that it will be recorded. Oh, it's good night, Pranshu. It is good evening. Okay, no worries. So put your name in the chat box. Okay. So you know periodic signal and aperiodic signal. So basically periodic signal means what? It repeats, like periodic signals are those signals which repeat its values at a fixed particular or for fixed interval of time, like sine wave, right? If the time period is of 2 pi, then after 2 pi we will observe same cycle repeating itself, right? So this is periodic signal. So not necessarily sine wave. It can be a square wave, triangular wave, or it can be of any form. If it is repeating itself of certain after some duration or certain time period, then it is called as पीरियडिक सिग्नल. सो पीरियडिक सिग्नल को हम अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहे, सो पीरियडिक सिग्नल periodic signals can be stated as x of t is equals to x of t plus
एन टी. सो आई होप यू गेट दिस. मतलब हर एक टाइम पीरियड के बाद में वो जो सिग्नल है वो सेम ही रहेगा, राइट. एंड इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस इन discrete form, so x of n will be written as x of n plus capital N. So this is continuous form, this is digital form or discrete form. Now there is one question for 1 mark. We have to find out fundamental time period or its frequency of the signal. Okay, so we'll directly jump onto that particular question. So let us suppose we have a signal that is x of t is equals to 10 cos square 10 pi t. So this is a signal and it is a periodic signal. And what is it? Fundamental period. So what we have to find here? Fundamental period. So this question can be asked for 1 mark. So how do we proceed with this? So first of all, it is cos square something into t. So we can we can use trigonometric formulas to convert this cos square into some cos thing. So I think you know this. Cos 2t is equals to 2 cos square t minus 1. This is trigonometric identity, right? So if we have to find formula for cos square t, so it would be cos square t is equals to 1 plus cos 2t divided by 2, and our x of t will become what? Now what will be our x of t, guys? Can you please tell me? It would be 5 plus 5 cos of 2t. Now tell me if you have any kind of doubt. Like हमारा जो x of t है अभी वो ये बन चुका है 5 plus 5 cos of 2t. Is it correct or wrong? Okay, yeah, 2t should be equal to 20 pi t. That is correct. Yeah. So यहाँ पे see, I was just expecting this from you. यहाँ पे 2t नहीं होगा, यहाँ पे होगा cos of 20 pi t. Okay, great. So this is our signal. Now since DC term does not affect fundamental period, so we take it as x of t is equals to 5 plus 5 it. मतलब क्या, ये जो DC टर्म है, ये जो 5 ऐड हो रहा है, so this 5 is basically a constant signal, and constant signal अगर ऐड होता है किसी सिग्नल में, so it does not interfere with its fundamental period. ठीक है, so इस सिग्नल को हम लिख सकते हैं x of t is equals to 5 plus 5 y of t. मतलब हमारा बेसिक सिग्नल जो है बेसिकली यही है, cos of 20 pi t. Okay, so y of t is equals to cos of 20 pi t. Now we will consider it as cos of 80. ओके, सो cos of 80. सो हमारा जो फंडामेंटल टाइम पीरियड रहता है या फिर फंडामेंटल पीरियड रहता है वो रहता है 2 पाई बाय a. दैट मीन्स 2 पाई बाय 20 pi, so it would be 1 by 10. So this is our fundamental period. Okay, so do you get this? मतलब हमने cos स्क्वायर को पहले cos के फॉर्म में कन्वर्ट किया, एंड जो cos की जो पर्टिकुलर एक टर्म थी, तो उसमें से जो t का कोएफिशिएंट है उसे हमने 2 पाई डिवाइडेड बाय दैट कोएफिशिएंट रख दिया, सो दैट वुड बी आवर टाइम पीरियड. ओके, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है तो उसे इन्वर्स करना पड़ेगा, सो दैट वुड बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. Okay, so I hope you get this. Any doubt, guys? If not, then please put no in the chat box so that we can move further. Okay, this question can be asked for 1 mark, no doubt. Okay, thanks, Raman. What about confirmation from others? No. Okay, Pranshu and Arjun, are you there? If you are there, you haven't put your name also. Please put your name in the chat box. That is our minimum requirement from you guys, right? So at least we should know how many students or who joined which class, right? So please put your name in the chat box, so that will be recorded as your attendance. And if you do not have any doubt, you can
simply put no in the chat box also. No response from Arjun and Pranshu yet. Okay, no worries. ठीक है. So अभी जो हमारा next topic है, that is okay. So before this, like let us suppose we have two signals. Okay, so let us suppose we have two signals, that is zt is equals to x of t प्लस y of t. मतलब हमारे पास एक ऐसा सिग्नल है जो कि बेसिकली दो सिग्नल्स का addition है, right? So for this signal we will have some time period tx, for this signal we will have some time period ty, मतलब दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड आएगा. लेकिन इन दिस केस व्हाट विल बी द टाइम पीरियड फॉर दिस पर्टिकुलर सिग्नल? तो अभी इस पर्टिकुलर सिग्नल का जो टाइम पीरियड रहेगा दैट विल बी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू LCM ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई. मतलब ये जो दो टाइम पीरियड हमने निकाले हैं इंडिविजुअल सिग्नल्स के, सो उन टाइम पीरियड का जो एलसीएम रहेगा दैट विल बी द टाइम पीरियड फॉर और फंडामेंटल पीरियड फॉर दिस सिग्नल z of t. Okay, yeah, Arjun, thank you, Arjun. Great. Okay, let's move further. Now we have even signals and odd signals. So I don't know whether you have idea about it or not. So even signals का अगर हम definition देखना चाहें, so in continuous time a signal is even. So कब होता है एक signal even? See, first I will name it as first, or I will just give it a star. Okay, so even signal, a continuous signal is said to be a even signal when x of minus t is equals to x of t. मतलब क्या कि ओके ओके, नो प्रॉब्लम अर्जुन, दैट्स फाइन. ठीक है. सो एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी, मतलब जो नेगेटिव एक्सिस पे सिग्नल है एज इट इज सिग्नल अगर पॉजिटिव एक्सिस पे है, लाइक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे वी आर कंसिडरिंग आवर रेफरेंस एज वाई एक्सिस. मतलब वाई एक्सिस जो है, मान लो कि हमारा मिरर है, लेफ्ट साइड का जो सिग्नल है वो एज इट इज मिरर इमेज ऑफ राइट साइड है. So then that is called as a even signal. So can you give me a example of even signal? मतलब even signal का example अगर आप मुझे कोई दे सकते हो, so a simple example. even signal क्या हो सकता है? mirror image, बिल्कुल. Yeah, cos is one of them. Yeah, cos x or cos x of t, is it? Cos of t, whatever it is, cos of x, cos of t. So basically cos signal is the one. Okay, y square, so it would be like curve like parabola, right? So y is equals to x square, so that would be again a even signal, right? So cos of x is one of them, or cos t is one of them, x square is one of them. So these are even signals, right? So this is about even signal. Now we have odd signals. So odd signals में क्या होता है? Odd signals में, so this is for time, sorry, continuous time, and for discrete time we have x of minus n is equals to x of n. Now for odd signals we have x of minus t is equals to minus of x of t. ठीक है. मतलब सिग्नल तो सेम ही रहेगा, लेकिन इट विल बी अगेन फ्लिप्ड ऑन द एक्स एक्सिस आल्सो. सो फॉर एग्जांपल मान लो कि अभी मेरे पास एक सिग्नल है, और सिग्नल की मैं बात कर रहा हूँ, साइन वेव इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट? साइन वेव इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ और सिग्नल. कैसे हो सकता है? सी, लेट अस सपोज दिस इज माय एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. सो वाई एक्सिस में मेरा साइन वेव यहां से शुरू होता है लाइक दिस, राइट? एंड एक्चुअल में मिरर से इमेज अगर रहेगा तो यहां से शुरू होना चाहिए था, राइट? लेकिन वो यहां से शुरू ना होके इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवॉट लाइक दिस, राइट? सो दिस इज द ऑड सिग्नल. सो साइन वेव is sin t is the best example of odd signal. Okay, now so next we have certain things like every single sorry every signal, each and every signal, it cannot be
इवन और ऑड, इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब अगर हमें कोई सिग्नल दिया है सो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो दोनों में से किसी एक कैटेगरी में बैठना ही चाहिए. इट मे बी इवन और ऑड, इट मे नॉट बी इवन और ऑड. सो एनी सिग्नल विच इज नाइदर इवन और नॉर एड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड सिग्नल. मतलब अगर कोई भी सिग्नल इन दोनों कैटेगरीज में नहीं होता है सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दैट. So how it is represented? See, so let us suppose we have a signal x of t. So it can be represented in two forms. So even x of even of t plus x of odd of t. मतलब see, ये even signal रहेगा, ये odd रहेगा. So how do we represent this? So see, x e of t will be calculated like x of t plus x of minus t divided by 2, and x of xo of t will be calculated as x of t minus x of minus t divided by 2. So even part इस तरीके से निकालते हैं, odd part इस तरीके से निकालते हैं. Okay, so I will give you one example, that is, let us suppose my x of t is equals to e raised to jt or it, whatever it is, I you call it I or j, it is basically the imaginary thing. Okay, so अगर x of t is equals to e raised to it है, so find its even part and its odd part. अभी इस सिग्नल का even part हमें find out करना है this one, and odd part का find out करना है this one. So can you just go ahead and find out that? Try to use those formulas, and cos x of t is, or cos of x, yeah, cos of t we will be calling it as, right? Cos t will be real part, and imaginary part will be, yeah, it is not actually sin t, it is I sin t, or it is j sin t, imaginary part. Okay, so see, Shardul, if you are not getting it, ठीक, see, यहाँ पे x of t हमारा क्या है, e raised to it है, so मैं x of t के जगह पे e raised to it ही रख देता हूँ, प्लस e raised to, अभी it है तो t के जगह पे हमें माइनस t रखना है, मतलब यहाँ पे क्या रखना है, e raised to minus it divided by 2. So this is nothing but representation of cos of t. Okay, this is nothing but representation of cos of t. और यहाँ पे अगर हमें odd part निकालना है, so इसमें क्या करेंगे हम, e raised to it minus e raised to minus it divided by 2. So it will be called as I sin t. ठीक है, so real part is this, imaginary part is this. So this signal can be represented as summation of these two signals. Okay, so that was it. ठीक है, so ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि what is imaginary part of this and what is real part of this. So next we have energy and power signals. Next we have energy and power signals. So this seems to be a very complicated topic. Okay, but it is not. We have few tricks for that. You can use the tricks and get this topic simplified. Okay, so the first trick is, or the first thing you have to remember is, exponential signals are neither energy or nor power signal. ठीक है, exponential signal अगर solely it is exponential signal, so it is neither energy or nor power signal. मैं सिर्फ exponential की बात कर रहा हूँ. Okay, next one is, if the area of this signal is finite, so then it may be an energy signal. It is not necessary that it will be an energy signal, but it can be an energy signal. Okay, so before, like suppose we have one signal and we have to calculate whether this is energy signal or power signal. So before placing that signal into the formula, we will check whether its area is finite or infinite. अगर उसका एरिया फाइनाइट है, so we will go for energy signal first. ठीक है, मतलब उसका एनर्जी पहले हम फाइंड आउट करेंगे.
ओके, सो इफ अभी ये हुआ सेकंड ट्रिक। फर्स्ट ट्रिक क्या था कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो है वो ना तो पावर सिग्नल रहते हैं ना ही एनर्जी सिग्नल रहते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट सोल एक्सपोनेंशियल सिग्नल, सो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस, राइट? सो या इस तरीके से या फिर इस तरीके से रहते हैं। सो इनका जो एरिया है, दिस इज नॉट फाइनाइट, दिस इज इनफाइनाइट एरिया अंडर दिस कर्व। सो दीज आर बेसिकली नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। सेकेंड वन मैंने बताया आपको कि अगर एरिया फाइनाइट है, सो इट मे बी एनर्जी एनर्जी सिग्नल। सो थर्ड ट्रिक जो है, सो थर्ड सिग्नल में देखिए, अभी मान लीजिए कि आपका एक सिग्नल है e रेस टू 2t एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ u ऑफ t, ठीक है? सो इन दिस केस, अभी देखो, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव पॉजिटिव। सो इन दिस केस दिस इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, मतलब ये दोनों भी नहीं है, ना पावर है ना एनर्जी सिग्नल है, इफ symbols आर सेम। ओके, सो इफ इट इज e रेस टू 2t and into u of t, or it is e raised to 2t into u of minus t. So in this case area becomes finite. Okay, so in this case area becomes finite and it may be an energy signal. समझ रहे हो? मतलब मैंने पहले क्या बताया कि एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स आर neither energy nor power, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि this may be energy signals. Why? Because of multiplying with u of t, the area is becoming finite. So that's why this is being converted into an energy signal. There is possibility of it, right? So we have few formulas for calculating energy of the signal and power of the signal. So formulas are for discrete as well as continuous time signal. So you can write down the formulas. So for formulas for continuous signal, so e is equals to integration minus infinity to infinity mod of x of t and its square into, or it is with respect to time. Okay, so this is for energy of continuous time signal, energy of continuous time signal, right? So similar for energy of continuous time signal, energy of discrete time signal will be, instead of integration we have summation. Summation is equals to n ranges from minus infinity to infinity and mod of x of n and its square. So this is again an energy signal, but it is in discrete time. Okay, so this is for energy. Write down the formula. Now for power we have again two formulas. Power in continuous time signal will look like this. Limit t tends to infinity 1 by t integration of minus t by 2 to t by 2 and x of t whole square with respect to time. So this is the energy for, this is power of continuous time signal. And for discrete time we have limit n tends to infinity 1 upon 2n plus 1 summation of small n minus n to n and mod of x of n whole square. So this is for power in discrete time, or this formula is for discrete time signal. Okay, so these two formulas are there. Again, there are certain things or certain tricks that we need to remember. Let us suppose now x of t or x of n, whatever we are considering, it is said to be an energy signal if and only if एनर्जी इज कैलकुलेटेड एज ए फाइनाइट वैल्यू। मतलब अगर एनर्जी की वैल्यू फाइनाइट आ रही है, सो देन एंड देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एनर्जी सिग्नल. इफ इट इज इनफाइनाइट देन इट विल नॉट बी एन एनर्जी सिग्नल. And not only this, so for energy signal its value should be, see, for energy signal energy should be finite, मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट के बीच में रहनी चाहिए. And second condition is power should be zero. Okay, and for power signal
it is vice versa. Power should be finite and energy should be infinite. So this is the thing. ठीक है. So इस तरीके से we can determine whether it is energy signal or power signal. One more thing we have to remember is that like shifting doesn't affect energy or power signal. मतलब अगर हम सिग्नल को शिफ्ट करते हैं, so it shifting does not changes its area. मतलब सिग्नल का जो एरिया है वो चेंज नहीं होगा शिफ्टिंग से, राइट? इट विल बी जस्ट लाइक उसका जो टाइम मतलब टाइम लाइन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट इट विल नॉट अफेक्ट द एरिया. सो शिफ्टिंग डज नॉट change power or energy. So what about time scaling, guys? I hope you know what is time scaling, right? So अगर हम time scaling करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा? Time scaling में energy और power may vary because time scaling directly affects the area, right? So that is the thing. Okay. So do you have any doubts, guys, like till this? अगर कोई doubt है छोटा मोटा तो पूछ लो. We can if not we can continue. Okay, your silence means you don't have any doubt. Okay, so let us suppose we have to calculate energy of a signal. Okay, so we have few tricks. We have few tricks for that. So what are those? I will give you the formulas here. So let us suppose we have two signals and they are like colliding with each other. So let us suppose this is one signal and this is other signal. ओके. सो अगर इसकी एनर्जी हमें निकालनी है, सो वी विल फाइंड आउट टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस 2 इंटू कॉमन एरिया, राइट? E1 रहेगी इसकी एनर्जी, E2 रहेगी इसकी एनर्जी, और बाकी जो 2 इंटू कॉमन एरिया लिखा है वो रहेगी इसकी एनर्जी. अभी इसकी इस सिग्नल की और इस सिग्नल की एनर्जी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो वी डोंट हैव टू अप्लाई फॉर्मूला ऑल द टाइम. ठीक है, मतलब कुछ कुछ सिग्नल ऐसे रहेंगे कि उसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू use your like common sense or aptitude we can say, right? So कैसे? See, अगर मान लीजिए कि your signal and you have to find out now we are discussing about energy only, okay? Forgot about power for now. So energy of a rectangular signal, अगर आपको कोई सिग्नल है जो कि रेक्टेंगुलर है, so you can use direct this formula, amplitude का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टाइम. मतलब अगर ये तुम्हारा सिग्नल रेक्टेंगुलर है तो इसका कुछ तो एम्पलीट्यूड रहेगा, सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दो इनटू जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी एनर्जी फॉर दिस रेक्टेंगुलर सिग्नल. रेक्टेंगुलर सिग्नल का फॉर्मूला ये हुआ. अभी उसी जगह पे अगर आपका सिग्नल ट्रायंगुलर है, okay, so don't go for the spelling, I have made mistake in it. Okay, so it would be 1 by 3 एम्पियर स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ टी. मतलब एम्पलीट्यूड अगर ये ट्रायंगुलर सिग्नल भी है तो इसका भी कुछ एम्पलीट्यूड रहेगा, सो दिस एम्पलीट्यूड उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इनटू दिस टाइम पीरियड टी. सो ये हुआ एनर्जी ऑफ ट्रायंगुलर सिग्नल. नाउ वी मे हैव अ सिग्नल which is half sine wave, this kind of a signal, right? So for this signal we have 1 by 2 into amplitude का square multiplied by t. So it becomes easy to find out energy for these signals. Okay, so these are the formulas for energy and पावर. सो पावर के लिए सिर्फ ये दो ही फॉर्मूला मैंने बताए हैं, एनर्जी के लिए ये तीन एडिशनल फॉर्मूलाज बताए जिससे कि योर कैलकुलेशंस विल बिकम अ बिट इजियर. ओके, so yeah, we were discussing about deterministic signal and random signal. So what is difference? Main difference between them is this: कि random signal cannot be specified in mathematical terms, right? So we are not going to deal with those. मतलब जो random signals है mostly हम उनके साथ में deal नहीं करेंगे in signal system. We will be we will be working with deterministic signal only. That is one thing. अभी सेकेंड जो होता है टाइप, दैट इज वन डायमेंशनल सिग्नल एंड मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स. सो वन डायमेंशनल सिग्नल यानी कि उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा. लाइक फॉर दीज सिग्नल्स, अगर अगर इन सिग्नल्स की बात करेंगे तो देयर इज ओनली वन वेरिएबल, दैट इज
time, right? Time is the only one variable, so that's why it is called as one dimensional signals. And we will be discussing about, or we will be studying about one dimensional signals only throughout our this subject, और throughout our this course, मतलब जो तुम्हारा इंजीनियरिंग का कोर्स है या फिर जो गेट का पार्ट है, सो उसमें हम वन डायमेंशनल सिग्नल के बारे में ही डिस्कस करते हैं, राइट? एंड देन वी हैव मल्टी डायमेंशनल सिग्नल्स एज वेल। सो उसमें क्या रहेगा कि ऑब्वियसली मोर देन वन वेरिएबल्स रहेंगे, and there will be complications as well, right? So let us suppose image of an object. So image may be, there are certain variables, not only like time or x-axis or y-axis, there are color gradient and all those things, different kind of scales, right? So depending upon that, those signals are determined as multidimensional, or yeah, multidimensional signals. Okay, so now we will solve few questions in which we have to calculate energy and power of the signals. So keep two tricks, two main tricks in your mind. So let us suppose, okay, my question to you is, let us suppose I have a periodic signal. So you know what is periodic signal, right? So for periodic signal, do we have एरिया एज फाइनाइट और इनफाइनाइट? मतलब जो पीरियडिक सिग्नल होता है उसका एरिया फाइनाइट होता है या फिर इनफाइनाइट होता है? कैन यू जस्ट टेल मी, इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट एरिया ऑफ एन periodic signal? Infinite, right? It is infinite. Area of periodic signal is infinite. So whether it can be a energy signal, क्या ये energy signal हो सकता है? No, it cannot be an energy signal. So what it can be? It can be a power signal. So you have two tricks. अगर area is finite, if area is finite, you will go for energy first. Okay, not only only energy, मतलब सिर्फ energy ही नहीं calculate करना है, power भी calculate करेंगे, that is another thing. But if area is infinite, then you will consider, or you will go for power first, right? So I have a signal, and you have to determine whether you want to calculate power for it or energy for it, right? So I will give you a signal as x of t is equals to a into sine of t. So what you will calculate for this signal particularly? What you will calculate? Do you getting this? Did you getting my point? I expect answer from Pranshu and Shardul. What you will calculate for this? Energy or power? Okay, so Raman says power. What about you guys? Can you calculate power for this? Power के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख देता हूँ. So I will write formula for power. क्या है power के लिए फॉर्मूला? Limit t tends to infinite 1 upon t into I think integration minus t by 2 to t by 2, और उसके बाद में x of t उसका स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t. ऐसा कुछ था ना फॉर्मूला, यही है शायद. या दिस इज द वन. So can you put all the values and calculate power? आई होप यू आर ऑन इट. अगर नहीं समझ रहा है प्रांशु और शार्दुल तो बता दो, मैं सॉल्व करूंगा. अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हो तो मुझे बता दो. ओके, अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आई विल वेट. This can be an actual question in the gate examination whenever you give it. Guys, any response?
Not able to solve, no problem. Okay, सी, तो सिंपली हमें क्या करना है, सी हमारा एक्स ऑफ टी जो है ना वो ये है ए इंटू साइन टी। ओके, सो रख दो पावर के फॉर्मूला में। अभी टाइम पीरियड क्या रहेगा, द मेन क्वेश्चन इज टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर साइन वेव गाइस, मतलब किस टाइम पीरियड के बाद में साइन वेव विल रिपीट इटसेल्फ। क्या रहेगा टाइम पीरियड, यूजुअली क्या रहता है, नॉर्मली क्या रहता है, रमन तुम मत बताना। या एग्जैक्टली 2 पाई, 2 पाई राइट। सो 2 पाई विल बी टाइम पीरियड राइट। सो यहाँ पे लिख दो लिमिट पाई टेंड्स टू इंफिनिटी, और लिखने की भी जरूरत नहीं सिंस इट इज कांस्टेंट राइट, इट इज नॉट इन टाइम ना, सो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है। सो वी कैन डायरेक्टली राइट इट इज 1/2 पाई, टाइम पीरियड जो है 2 पाई है। और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या आएगा फिर, माइनस पाई से लेके पाई आएगा, बिकॉज इट इज t/2 ना। देन एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर राइट, सो मतलब a इंटू साइन ऑफ टी होल स्क्वायर। No, forget about this mod and all because it is sine signal. Okay, it will not matter if it is negative signal, then we have to make changes in this, right? So it does not matter. It like it doesn't makes any sense here. Okay, so इसका जो अगर हम एक्सपांड करेंगे, सो आई विल नॉट राइट ऑल दोस हियर, सो सिर्फ इसको ही लिखता हूं मैं, ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टी मिलेगा हमें राइट यहाँ पे। So a square is a constant. We can take it out of integration. But since we do not have integration for sine square t के लिए हमारे पास integration नहीं है, so we can use identities of trigonometry. Like trigonometry में कुछ identities है ना, so if I'm not wrong, so sine square t can be replaced with 1 minus cos of t by 2. Okay, please correct. Sorry, it is cos 2t by 2. Okay, it is cos 2t by 2. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, सो साइन स्क्वायर टी को हम ऐसे लिखेंगे। सो या अभी यहाँ पे देखो, 1/2 पाई की जगह पे मैं लिखूंगा ए स्क्वायर बाय 2 पाई, मतलब ये जो ए स्क्वायर है ना ये बाहर ही आ जाएगा इसके इससे। एंड इंटीग्रेशन विल बी माइनस इन्फिनिटी नहीं, माइनस पाई से लेके पाई, और 1 - कॉस ऑफ 2t डिवाइडेड बाय 2 एंड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अभी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर चला जाएगा राइट। सो अगेन यू कैन सेपरेट दिस, मतलब 1/2 सेपरेट होगा, और 1/2 माइनस कॉस ऑफ 2t/2 ये एक सेपरेट होगा राइट। सो सी कैसे, ए स्क्वायर बाय 2 पाई, एंड यहाँ पे माइनस पाई से लेके पाई, और 1/2 को मैं सेपरेट कर दूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। और सिमिलरली ए स्क्वायर बाय 2 पाई एंड अभी ये जो cos 2t/2 है, सो ये 2 को मैं 1/2 लिख देता हूँ बाहर इंटीग्रेशन के बाद, सिंस दिस इज अ कांस्टेंट, और सिर्फ बाद में माइनस पाई से लेके पाई, एंड इट इज cos ऑफ 2t विथ रिस्पेक्ट टू t राइट। सो यहाँ तक इस तरीके से हम करेंगे। नाउ अभी ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन, it is I think 1/2 right। So solve further what it will be। Try solving students। Okay, a square by 2 fine। ठीक है, any doubt guys? शार्दुल,
नो डाउट। ओके, सो इसका जो आंसर है वो रहेगा a square by 2, then this is power of this signal. Which signal? A sin t. Okay, so this is power of this signal. Now I will give you one more question. So isme you have to calculate power, and this will be last question for today. Okay, so let us suppose we have a question like this. This is a triangular signal, this is a square signal, this is again triangular signal, and this is a square signal, and this is continued. मतलब ये what we can say, this is periodic signal, मतलब ये certain period, after certain period it is repeating itself, right? So यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, so यहाँ पे 7 रहेगा और यहाँ पे 8 रहेगा, मतलब ये जो टाइम पीरियड है ये ट्रायंगुलर सिग्नल का वो 3 है, इस रेक्टेंगुलर सिग्नल का 1 है टाइम पीरियड, और इनका जो एम्पलीट्यूड है, सो एम्पलीट्यूड यहाँ पे हमें दिया है 4. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, राइट? सो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? पावर निकालना है. सो पावर निकालने के लिए पहले तो हमें इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और फॉर्मूला निकाल के बाद में वो जो पावर का फॉर्मूला है उसमें रखेंगे, सो इट विल बी अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग. ओके, सो वी कैन डू वन थिंग. पावर कैन नो या आई विल गिव यू वन हिंट हियर. सी, अभी यहाँ पे दो फॉर्मूलाज देखो. सी, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पावर, मतलब जो हमारा कंटिन्यूस टाइम है ना, ये पावर का फॉर्मूला है, और ये जो है ये एनर्जी का फॉर्मूला है. सो व्हाट इज दैट डिफरेंस, मतलब ऐसा क्या डिफरेंस, मेन डिफरेंस इस फॉर्मूला में है? तो सी, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, ये जो 1/t लिखा है ना, सो ये 1/t से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, या फिर वन सिर्फ खाली t से डिवाइड किया गया है, वी कैन से दैट. ओके, सो एनर्जी के फॉर्मूला को अगर हम टाइम पीरियड से डिवाइड करें, सो वी कैन गेट पावर, बट नॉट फॉर ऑल द केसेस. ठीक है, मतलब अगर जिस केस में हमें फॉर्मूला निकालना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है पावर के लिए, सो इन दैट केस वी कैन यूज दिस ट्रिक. कौन सी ट्रिक? एनर्जी डिवाइडेड बाय टी. टी इज व्हाट? टी इज टाइम पीरियड. दैट विल बी कंसिडर्ड एज power signal, or the power of that signal. Okay, so let's go ahead and कैलकुलेट पावर. सो नाउ सी, हमें यहाँ पे एक्चुअल में पावर ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन पहले इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करो, इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट करो, और दोनों की एनर्जी ऐड करके उसके टाइम पीरियड को, सॉरी उसको उस टाइम पीरियड से डिवाइड करो. सो इसकी एनर्जी फाइंड आउट करो पहले. सो एनर्जी फॉर ट्रायंगल, मैंने कुछ फॉर्मूला दिया था. एनर्जी फॉर ट्रायंगल विल बी 1/3 इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. सो यहाँ पे 1/3 रहेगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यानी कि 16 रहेगा, और टाइम पीरियड t क्या है? 3 है, राइट? यहाँ पे टाइम पीरियड 3 है ना इस ट्रायंगुलर वेव के लिए, सो ये 3 से 3 कट जाएगा. 16 विल बी एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर E इज इक्वल्स टू 16. ये जो एनर्जी है ये इस पर्टिकुलर सिग्नल की है. ओके, नाउ यू मे हैव क्वेश्चन. सर, आप बोल रहे थे कि अगर किसी सिग्नल की पावर फाइनाइट है तो उसकी एनर्जी इनफाइनाइट होनी चाहिए, राइट? हमने मतलब नाउ आई एम कॉन्ट्रडिक्टिंग माय स्टेटमेंट की सर यहाँ पे तो आपने पावर भी निकाल ली, नहीं सॉरी एनर्जी भी निकाल ली, एंड नाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट पावर आल्सो. सो हाउ इज दैट पॉसिबल? सो गाइस, रिमेंबर द थिंग, we are calculating energy for this particular सेगमेंट, मतलब सिर्फ इस सेगमेंट के लिए हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, सिंस वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ फाइनाइट एरिया. मतलब सिर्फ हमें सिर्फ 0 से लेके 3 तक ही लेना देना है, 3 के बाद क्या होता है, 0 से पहले क्या होता है, इससे हमें लेना देना नहीं है. सो इन दैट केस वी कैन कैलकुलेट एनर्जी हियर. ओके, सिमिलरली फॉर दिस, अभी स्क्वायर वेव के लिए मैंने बोला था ना कि स्क्वायर सिग्नल के लिए भी एक फॉर्मूला है. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? एम्पलीट्यूड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी. सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर कितना है? 16, और 16 मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड इसका कितना है? व्हाट इज टाइम पीरियड फॉर दिस स्क्वायर सिग्नल और रेक्टेंगल सिग्नल, वॉट एवर इट इज? What is time period? Is it 4 or 1?
इट इज 1, एग्जैक्टली इट इज 1. सो 16 इंटू 1 मतलब दोनों जो सिग्नल है, ट्रायंगुलर सिग्नल और स्क्वायर सिग्नल, उसका जो उनकी जो एनर्जी है वो कितनी आई, 16 ईच आई. मतलब E1 भी हमारी 16 है, E2 भी हमारी 16 है, राइट. सो दिस इज E1 इज इक्वल्स टू 16 फॉर दिस सिग्नल एंड E2 इज इक्वल्स टू 16 फॉर दिस सिग्नल. सो अभी E1 प्लस E2 अगर हम करेंगे सो इट विल बी 32. तो मैंने क्या बोला था कि 32 को हमें क्या करना है, टोटल टाइम पीरियड से हमें डिवाइड करना है. ओके. सो इन दिस केस power of this signal will be 32 divided by 4, that is how much, 8. So power will be 8 units or whatever the unit is. Power will be basically 8. So I hope that this was clear for you. Okay. Now I will give you one more question and you have to solve it as your homework or whatever you say, exercise. Okay. So let me just draw that signal and you can take screenshot of it. Okay. Yeah, this is the line that I wanted to draw here. This is my y-axis. Oh yeah, it is perfect. It is perfect. This is a square signal, a rectangular signal. This is a triangle signal. And I have one more half sine wave kind of signal here. And this is again a periodic signal. Okay. So इस particular signal की जो time period है वो है 3, इसका भी है 3 और इसका भी है 3. Okay, so you have to calculate power for this signal. This is y-axis, this is minus x-axis, this is x-axis, this is minus y-axis. Now you can take the screenshot of this screen and you can solve it and send me your answers as per your convenience. Okay, so that's it for today, students. I hope I added some value to your studies or knowledge. Is it 1? Okay, yeah, amplitude is 1. Sorry, my bad. It is 1. Amplitude is 1. Amplitude should have been given. ठीक है. Okay, so that's it for today, students. Take your screenshot and you can leave the class. That's it. Bye bye. Good night. Good night. Yeah, welcome, Shardul. Bye bye. Bye, Pranshu.